हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आदिल शेख। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मॉडिफाइस्टिकर्स पे, जिसपे हम डेली मॉडिफिकेशन रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। अगर आप मॉडिफाई लवर हैं और मॉडिफाइंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो बिना एक्स्ट्रा टाइम के स्टार्ट करते हैं आज के मॉडिफिकेशन वीडियो। चलिए दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो बम्पर रिमूव हो चुका है, तो हम इसको सेपरेटली लेके हम उस पर DRL इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन के लिए आपको ड्रिलिंग की ज़रूरत है। इस पर आपको दो बिट लगेंगे, एक बारीक वाला बिट और एक मोटा वाला बिट, जिससे मोटे वाले से आपको वायर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और बारीक वाले पे आपको दोनों स्क्रू लगाना पड़ेगा, जो आगे वाले सिल्वर कोटेड पीस पे आके लगेंगे। DRL के पीछे वाले हम टू वे गम को रिमूव करके हम जस्ट इसको स्टिक करते हैं।
का कलेक्शन जैसा कि हमारा कनेक्शन सब हो चुका है दोस्तों, अब जस्ट जो बम्पर को हमने फिटिंग करने का बाकी रखा था हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने DRL ऑन किया हुआ है जो बैकलाइट से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों हमारा काम कंप्लीट, और कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हो DRL कैसा दिखता है, और साथ ही साथ आपको इंडिकेटर में हम ऑन करके दिखा देते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, और साथ ही साथ आपको अगर DRL चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मॉडिफाइड।